In this video, we will discuss about Dirichlet integral. Dirichlet integrals. So we have a Dirichlet integral for 2 variable and 3 variable. So we consider the double integral. Suppose we are assuming I equal to double integration x raised to the power m minus 1, y raised to the power n minus 1 into dx dy for all positive values of x and y, values of x and y, such that x plus y is less than equal to 1. So basically we are talking about the two-dimensional. So now when we draw xy plane, so here is x-axis, horizontal axis, then vertical axis, that is the y-axis. Now we take the all positive values. All positive value, it means when x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. So we are considering, so here on x-axis, horizontal axis, y equal to 0 होता है और and vertical axis here is x equal to 0. Now we have the equation x plus y we consider as equal to 1. So when we find out the coordinate, so first we put y is equal to 0, so gives us x equal to 1, and put x equal to 0, we get y equal to 1. So here we have 2 points 1 comma 1. So for on x-axis here we have a 1, and also y-axis we have 1. So this coordinates are 1 comma 0, or the coordinate of this is 0 comma 1. So when we join these 2 points, so this will be the line which gives us x plus y equal to 1. So now when we are considering the region for all positive coordinate towards to 0, so this is our common shaded region. Basically we are talking about the region for positive coordinates. So below the line x plus y, so less than equal to 1, we already mentioned in the uh, line. So x plus y which is less than equal to 1. So on the boundary or inside the boundary. So this is our uh, region. So now, so we take a elementary strip. So we take a elementary strip which is taken as the parallel to y-axis. So y-axis के parallel हमने एक elementary strip ले ली, whose length and width are dx and dy. So now, for obtaining the limits, so we talk about the for limits. Now, limits we are considering for x. So first we consider for x. So here on x-axis, the area covered is from x is equal to 0, means y-axis से लेके और यहाँ पर क्या पॉइंट है हमारा x equal to 1. So x equal to 0 to x is equal to 1. Now we talk about the y. So y means y equal to 0. So this strip touch the x-axis, or at x-axis y equal to 0. So y equal to 0 or to touch the line. So for touching this line, so what is the equation? So equation will be in the form of y equal to 1 minus x. So we obtain for y equal to 1 minus x. So now these are the limits. So we have the integration I. So this we can solve as I equal to integrations for taking limit as 0 to 1 for y, which is 0 to 1 minus x raised to the power m minus 1, and y raised to the power n minus 1 into dx dy. अब यहाँ पर देखते हैं कि जो वेरिएबल लिमिट है वो किसके लिए है. वेरिएबल लिमिट इज फॉर y. तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y. तो पहले इंटीग्रेट करना होगा किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट. तो व्हेन वी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y, सो वी टेक द इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू 1. सो x रेज टू पावर m माइनस 1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, dx भी कांस्टेंट उसके साथ ही आएगा. तो y रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई. सो y रेज टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, integration will be y raised to the power n upon n. So we take the limit as 0 to 1 minus x.
Now, so we apply the limits. So when we apply the limits, so we get x equal to 0 to 1, x raised to the power m minus 1 into dx, and this gives us 1 minus x raised to the power n upon n, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 है तो 0 अपॉन n. So basically we get 1 upon n is constant, we take outside. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस वन, और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स. अब n माइनस वन तो है नहीं यहाँ पर, तो वी remove this minus one. So now we know that the beta function. A beta function formula. What is the beta function? So beta function is defined as beta mn. Beta mn is equal to integration 0 to 1 x raised to the power m minus 1 और 1 minus x raised to the power n minus 1 into dx. तो ये हमारा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है. सो विच इज डिफाइंड फॉर दिस. नाउ पहला टर्म हमने देखा कि x रेज टू पावर m माइनस वन एज इट इज है, बट सेकंड टर्म क्या है, पावर n माइनस वन है, बट वी हैव द पावर n only. So we add plus 1 and minus 1. We subtract minus 1. So we make minus 1 form. So this is a n plus 1 bracket. So now, so on the basis of that, we use the definition of beta function. So here we write down using the definition of beta function. So when we use the definition of beta function, so this can be written as 1 upon n beta m. अब m के प्लेस पे तो m ही है, बीटा m, और n के प्लेस पे क्या रिप्लेस हुआ है, n प्लस वन, तो बीटा m इंटू n प्लस वन. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज m और n प्लस वन. अब यहां तक तो सॉल्व कर लिया. अब हमें क्या करना है, फिर डेफिनेशन यूज करनी है किसकी, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा की. रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. So what is the relation between them? The relation between them is beta mn is equal to gamma n upon gamma m plus n. So we apply this definition. So 1 upon n of m can be written as gamma m, और n के प्लेस पे क्या है, n plus 1. So this will be gamma n plus 1 upon gamma m plus n plus 1. और एक और डेफिनेशन अगेन हम अप्लाई करेंगे. तो रिलेशन बेसिकली क्या है, गामा जो n प्लस वन होता है वो किसके इक्वल होता है, n गामा n के, और वी कैन से दैट द फैक्टोरियल n, बट हियर वी यूज द n गामा n. सो वी ऑल्सो रिमेंबर दिस. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n गामा m, और ये गामा n प्लस वन कैन बी रिटन एज n गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस वन. तो यहाँ n से n कैंसिल्ड हो जाएगा. अब n से n कैंसिल हो गया तो ये क्या रहा न्यूमरेटर में, गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस वन. So this is the value of the given integral, that is I. So we have, so we write down this as when all positive values basically. So we can write down this as double integration x raised to the power m minus 1 y raised to the power n minus 1 into dx dy is equal to gamma n upon gamma m plus n plus 1. So where we have a x positive, y positive, and x plus y less than equal to 1. So we remember this definition. और डायरेक्टली इंटीग्रेशंस में हम इसे यूज कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन जहां भी हमें सॉल्व करना है और इस तरीके की कंडीशन आ रही है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन मेक दिस कंडीशन by using substitution. So we have derived for टू वेरिएबल. तो सिमिलरली अब हम इसे थ्री वेरिएबल के लिए सिमिलरली वी कैन राइट डाउन. सो सिमिलरली फॉर थ्री वेरिएबल्स, so we write down for three variable. So directly the triple integration, we basically calculate the volume. So triple integration x raised to the power l minus 1, y raised to the power m minus 1, z raised to the power n minus 1, dx dy or dz is equal to gamma m, gamma n
sorry, gamma L, gamma M, gamma N upon gamma L plus M plus N plus 1. So just we extend two variable to three variable. So we just extend the formula also. So we have two variable M and N. So we have a gamma L also in this. So we extended gamma L, gamma M, gamma N upon gamma L plus M plus N plus 1. So this is for three variable case. So in three variable, we have the conditions X, Y, Z all are positive, and X plus Y plus Z less than equal to 1. So basically this we can say that V, so V is the volume. So V denotes the closed region. V denotes the closed region bounded by the coordinate planes. And the plane X plus Y plus Z is equal to 1. So basically you can draw the graph. This is for three-dimensional. We are calculating the volume. Here we have origin. We have x-axis, this y-axis, and z-axis. All axes are mutually perpendicular to each other. So we just draw. This is the plane. So we take the coordinate. This is C. Here we denote it as B. This we can denote it as A. So A coordinate of A क्या होंगे 1,0,0 three dimensional. B coordinate 0 1 0 और coordinate of C will be 0 0 1. तो 0 0 1. सो इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा एक्स वाई प्लेन होगा यहाँ पे वाई जेड प्लेन और दिस विल बी द जेड एक्स प्लेन. तो बेसिकली okay, this is the three dimensional, so we can solve for that. So here volume dv can be denoted as dx, dy, and dz. So this is the xy plane. The coordinate equation of xy plane is x plus y equal to 1. Or for this one, the equation will be zx. So x plus z equal to 1. And similarly for here yz, so y plus z equal to 1. And for all, you can make as, so we can draw the graph in this way. So just we draw this one and we take the three dimensional. We can write down this as z equal to 1 minus x minus y. So this is for three dimensional. We have to remember this is Dirichlet formula for three variables. Now we move to the extension. So we write down as extension of Dirichlet integral. Dirichlet's integral. So extension of Dirichlet integral is basically known as Lieuville
Lieuville formula. Lieuville formula is the extension of Dirichlet integral. So this can be defined as if x, y, z all are positive. Basically, we consider all are positive such that x plus y plus z is less than equal to h. Or basically, we bound this from h1 to h2. So then triple integration function of x, y, z, x raised to the power L minus 1, y raised to the power n minus 1, z raised to the m minus 1, z raised to the power n minus 1 into dx, dy, dz is equal to gamma L, gamma m, gamma n upon gamma L plus m plus n integration h1 to h2 function of u and u raised to the power L plus m plus n minus 1 into du. So this is the extension of Dirichlet integral that is called Lieuville formula. तो बेसिकली पहले दोनों पार्ट्स में दैट मींस डिरिचलेट इंटीग्रल में फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था एफ एक्स वाई जेड बट हियर वी इन्वॉल्व द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड सो दिस इज द एक्सटेंशन part of Dirichlet integral. Now we solve a problem based on these three formula. So first question we take as evaluate the triple integral. Evaluate the triple integral triple integration x raised to the power L minus 1, y raised to the power m minus 1, z raised to the power n minus 1, dx, dy, dz, where x, y, z are always positive, but limited by the condition x upon a raised to the power p plus y upon b raised to the power q plus z upon c raised to the power r is less than equal to 1. Okay, so we solve this question. So now we consider, so let we consider these values because we have this condition x plus y plus z less than equal to 1. So here we consider this as so x upon a raised to the power p is equal to u. Similarly, second term y upon b raised to the power q is equal to v और थर्ड हमने क्या लिया z upon c raised to the power r is equal to w because we make the equation of plane x plus y plus z less than equal to 1. So we write down the value of this. So we implies x upon a. X upon a is equal to u raised to the power 1 upon p. So this gives us x equal to a into u raised to the power 1 upon p. So when we differentiate this, the dx gives us a upon p u raised to the power 1 upon p minus 1 into du. Okay, so now similarly, we solve for y, this second term. So this can be written y upon b is equal to v raised to the power 1 upon q. तो y क्या हो जाएगा यहाँ से b into v raised to the power of 1 upon q.
और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy इज इक्वल टू b अपॉन क्यू वी रेज टू द पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1 इंटू dv. नाउ फॉर थर्ड वन, z upon c, this equal to w raised to the power 1 upon r. So z is equal to c into w raised to the power 1 upon r. So then dz is equal to c upon r w raised to the power 1 upon minus 1 upon r minus 1 into dw. Okay, so these are the values of x, y, and z. So when we obtain the value of x, y, and z, so we see that the given integral, the given इंटीग्रल इंटीग्रल क्या दे रखा है? इंटीग्रल दे रखा है ट्रिपल इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर l माइनस वन, y रेज टू द पावर m माइनस वन, z रेज टू द पावर n माइनस वन, dx dy और dz कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? यूवीडब्ल्यू में, क्योंकि हमें कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है कि ऑल आर पॉजिटिव यूवीडब्ल्यू, जब एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो यूवीडब्ल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे। और जो हमारा रिलेशन दे रखा है, दैट मीन्स दिस रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन। तो दिस इक्वल टू, अब एक्स रेज टू द पावर एल माइनस वन, तो एक्स क्या है हमारा? एक्स है ये ए यू रेज टू द पावर वन अपॉन पी। So this can be written as a u raised to the power 1 upon p or whole to the power l minus 1. Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? Y will change into the form of b v raised to the power 1 upon q into m minus 1. और थर्ड क्या होगा? Z, तो c w raised to the power 1 upon r n minus 1 into dx dy dz। अब dx क्या है? dx है हमारा a अपॉन p u रेज टू द पावर 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू डी यू। और y क्या है? dy सॉरी, b अपॉन q v रेज टू द पावर 1 अपॉन q माइनस 1 इंटू dv। और dz तो c अपॉन r और w रेज टू द पावर 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू dw। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा कि u v और w, वी ऑल थ्री आर पॉजिटिव एंड रिलेशन क्या हो जाएगा? u प्लस v प्लस w विच इज लेस देन इक्वल टू वन। सो देन सब्जेक्ट टू कंडीशन बेसिकली, so then we can apply Dirichlet integral directly. So we apply Dirichlet integral directly. So अब यहाँ पे देखते हैं हम a रेज टू पावर क्या है? l माइनस वन है, और यहाँ पर एक a इधर आ रहा है, तो a रेज टू द पावर क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। ए रेज टू द पावर एल माइनस वन इस यहाँ से आएगी, और एक ए यहाँ से आएगा, ए रेज टू द पावर एल। सेम यहाँ से बी रेज टू द पावर एम माइनस वन, और एक बी यहाँ से आ जाएगा, तो बी रेज टू द पावर क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। और सी रेज टू द पावर एन माइनस वन, और एक सी यहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा? सी रेज टू द पावर एन हो जाएगा अपॉन। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है? पी क्यू आर है, तो ये आ जाएगा पी क्यू आर। और ट्रिपल इंटीग्रेशन, अब जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा, अब यहाँ पर क्या है? u u रेज टू द पावर l अपॉन पी, और यहाँ से l अपॉन पी मीन्स अभी मल्टीप्लाई दिस l अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी, और यहाँ से प्लस वन अपॉन पी है, तो ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा u रेज टू द पावर l अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी। ये तो यहाँ से हो गया, और एक u ये है, और पावर जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वन अपॉन पी माइनस वन ये हो जाएगा। सेम v क्या हो जाएगा? एम अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन क्यू, और सेकंड टर्म यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस वन अपॉन क्यू माइनस वन हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या होगा? एन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर और प्लस वन अपॉन आर माइनस वन। और लास्ट क्या बचेंगे हमारे? डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर एल, बी रेज टू द पावर एम, सी रेज टू द पावर एन अपॉन पी क्यू आर ट्रिपल इंटीग्रेशन। और वन अपॉन पी से वन अपॉन पी कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या रहेगा? u रेज टू द पावर l अपॉन p माइनस वन। सेकेंड टर्म क्या रहेगा? v रेज टू द पावर m अपॉन q माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएंगे। और w क्या रहेगा? n अपॉन r माइनस वन, तो ये वन अपॉन आर से वन अपॉन आर कैंसिल।
तो ये हो जाएगा डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब डिरिचलेट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर डिरिचलेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर एल बी रेस टू द पावर एम सी रेस टू द पावर एन अपॉन पी क्यू आर। और अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल तो ये क्या हो जाएगा, गामा एल अपॉन पी, यहाँ से होगा गामा एम अपॉन क्यू, यहाँ से होगा गामा एन अपॉन आर अपॉन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा गामा एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर और प्लस वन। तो इससे ज्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ we can take one more question based on this. So this is question number 2. So for solving this question, so we write down the evaluate the triple integral I equal to triple integration dx dy dz upon square root of a square minus x square minus y square minus z square. So the integral being extended to all positive values, to all positive values of the variables for which the expression is real. Expression is real. So what is the expression? So we see that this is our expression. So this expression is real. So here we write down the expression. Expression we take as a square minus x square minus y square minus z square. So this will be real. Will be real if this can be converted or written into the form of a square minus x square plus y square plus z square greater than 0. Or we can say that x square plus y square plus z square is less than a square. So this is less than a square. So this can be written as x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square less than 1. So less than 1. So now this is the condition. So now we can use this again substitution. So we put x square upon a square is equal to u, y square upon b square is equal to v, or z square upon c square is equal to w. So this makes us u plus v plus w less than 1. So when we are putting these things, so we can write down the value of x, y, and z. So for this one, so x square is equal to a square into u. So x equal to a into u raised to the power 1 by 2, or dx will be a by 2 or u raised to the power 1 by 2 minus 1 into du. Similarly, for this one, so y square upon b square. So y square equal to b square into v. So y is equal to b into v raised to the power 1 by 2, or dy is equal to v v by 2 v raised to the power 1 by 2 minus 1 into dv. Or similarly for this one, so z square equal to c square w. So z equal to c w raised to the power 1 by 2, and dz equal to c by 2 w raised to the power 1 by 2 minus 1 into dw. So after doing these things, so we can move to the integration I. So integration I is equal to triple integration dx dy dz upon root
a square minus x square minus y square minus z square. So can be written as this can be written when we convert this into the UVW form. So this can be written as uh, dx dy dz. So what is the value of dx dy dz? The value of dx dy dz is a upon 2 u raised to the power 1 upon 2 minus 1 into du, and b raised b by 2 b raised to the power 1 by 2 minus 1 into dv, and c by 2 w raised to the power 1 by 2 minus 1 into dw upon root. So this can be converted into the form of x upon a, or that is, so we can take a square means as common. So when we take a square is common, so this can be 1 minus x square upon a square minus y square upon a square minus z square upon a square. So here we do one changes. So these are the a a square. So means a square a square. So we write down as a square a square. So there we, so this is our a square. So means a, so we write down as a square a by 2. So this is a by 2 again a by 2. Okay. So we write down for ABC in the form. So now this can be written as ट्रिपल इंटीग्रेशन. सो न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 - 1 और v रेज टू द पावर 1/2 - 1 और w रेज टू द पावर 1/2 - 1 और du dv और dw अपॉन दिस कैन बी रिटन एज a and square root of 1 minus of x square upon a square. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है हमारा u, तो ये हो जाएगा u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w. So now we write down this as a square upon 8. अब a square upon 8 और ट्रिपल इंटीग्रेशन. तो यहाँ से दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 1 माइनस u प्लस v प्लस w, और u रेज टू द पावर 1/2 - 1, v रेज टू द पावर 1/2 - 1 और w रेज टू द पावर 1/2 - 1 du dv और dw. अब यहाँ पर क्या है फंक्शन आ रहा है, तो फंक्शन आ रहा है, तो अब इस केस में हमें क्या करना होगा ल्यूविले फॉर्मूला यूज करना होगा. तो यूजिंग ल्यूविले फॉर्मूला, और ल्यूविले फॉर्मूला वहां पे तो हमने यू की फॉर्म में लिख दिया है, बट यहाँ पर हमने यूवीडब्ल्यू वेरिएबल में ले लिए हैं, तो हम उसको चेंज कर देंगे. तो दिस इसको क्या लिख देंगे ए स्क्वायर अपॉन 8, और पहला क्या होगा गामा एल. तो गामा एल मतलब गामा 1/2, गामा एम 1/2, गामा एन 1/2 अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन. तो दिस इज अवर ल्यूविले फॉर्मूला. सो गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम एल प्लस एन, और लिमिट दिस और फंक्शन और यू. तो फंक्शन हम किसी और फॉर्म में कंसिडर कर लें. तो दिस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जो हमें फॉर्म दे रखा है वो क्या है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन 1. तो लिमिट्स क्या होंगी ऑल पॉजिटिव हैं, तो 0 से 1 और एफ टी, तो वी कैन कंसीडर एज टी. सो फंक्शन ऑफ टी, तो फंक्शन ऑफ टी ये फंक्शन ऑफ टी में हो जाएगा हमारा. तो टी किसको अज्यूम करेंगे इसको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को. तो दिस कैन बी रिटन एज एफ टी. सो मीन्स वन वन अपॉन और रूट में क्या हो जाएगा 1 - टी. तो 1/1 - टी
और टी टी रेज टू द पावर टी रेज टू द पावर 1/2 एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टी। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा, रूट पाई रूट पाई अपॉन, इधर क्या होगा, गामा 3/2 होगा। गामा 3/2 क्या होता है, 1/2 इंटू रूट पाई। तो रूट पाई से रूट पाई ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 1/√1 - टी, और यह बचेगा टी रेज टू द पावर 1/2, टी रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। तो टी रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसमें क्या है कि यहाँ भी हमारी लिमिट क्या है, 0 से 1 है, और 0 से 1 में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन के लिए क्या होगा, अब ये तो हो गया a² अपॉन 8, और रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई। तो ये हो जाएगा a² पाई, और 2 ऊपर चला जाएगा, सर ये हो जाएगा 2। तो मतलब 2 a² पाई अपॉन 8, और इसको क्या लिख देंगे, 0 to 1। अब टी रेज टू द पावर 1/2 है, इनटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - टी रेज टू द पावर -1/2, न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a² पाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको बीटा की डेफिनेशन में लिखना है। अब बीटा क्या कहता है कि बीटा एम एन है, तो बीटा एम एन 0 to 1 इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक्स की पावर m-1 होनी चाहिए, और 1 - एक्स की पावर n-1 dx होनी चाहिए। अब ये t है, अब t की पावर 1/2 है, इसे m-1 में बनाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 3/2 - 1। तो ये 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर है 1 - टी, और -1/2 है, और -1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/2 - 1 लिख सकते हैं क्लियरली, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बीटा की डेफिनेशन, तो बाय यूजिंग बीटा फंक्शन डेफिनेशन। So when we use beta function, so this can be written as a² पाई अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बीटा 3/2 हो जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, 1/2। सो बीटा 3/2 एंड 1/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो a² पाई अपॉन 4, और रिलेशन यूज करेंगे बीटा गामा, तो ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा m+n। तो 3/2 प्लस 1/2। So this can be written as a² पाई अपॉन 4, a² पाई अपॉन 4, और गामा 3/2 वैल्यू इज 1/2 इंटू रूट पाई, और इधर 1/गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई, और नीचे कितना हो जाएगा, गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, a² और पाई इंटू पाई पाई, मतलब पाई रूट पाई और पाई इंटू पाई पाई² अपॉन 2 4 जा 8। तो दिस इज अवर आंसर।